सो वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन सिंटैक्स के अंदर को यूज़ करते हुए हम क्लासेस कैसे बना सकते हैं। अब इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हम मज़ीद कौन कौन से फंक्शंस इसमें यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली हम देखेंगे कि आपने ऑपरेटर्स को किस तरह ओवरलोड करना, फॉर एग्जांपल, और हम देखेंगे कि आप सिंपल क्लासेस को यूज़ करके बड़ी क्लासेस किस तरह से बना सकते हैं। सो जस्ट टू रिकैप, ये हमारे पास एक पॉइंट क्लास है और इसके अंदर वी डिड ऑल दी कंस्ट्रक्टर्स, वी डिड दी getters, and this function basically prints the value of this point in a specific format. Fine. Now what I want you guys to do is to pause the video and do this. Basically इसमें आपने एक नया method लिखना है which is called the distance, or what this distance method does is कि आपके current point और other point which is passed as a parameter, इन दोनों के बीच में अपने distance निकालना है। और हम मैथ क्लासेस में हाई स्कूल में देख चुके हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो दोनों के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वैसे ही हिंट देता हूँ, इट्स गोइंग टू बी x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared under root. So pause the video and try to do this. Write the code, return the value जो कि distance की बनती है, and then I'll come back in with the solution in 3, 2, 1. So this is one way to write the distance function. Basically, again, it's going to be self.x minus other.x square plus self.y minus other.y squared का whole under root. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये आपको एविडेंटली तब नज़र आती है जब आप क्लास दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे आपने डिस्टेंस फंक्शन लिखा, अब आप डिस्टेंस में से ये जो इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू गेट एक्स और गेट वाई। और ये हमने एब्स्ट्रैक्शन वाली वीडियो में बहुत डिटेल से देखा है कि यू शुड नॉट डू दैट। हियर वी आर ब्रेकिंग दैट, वायलेटिंग दैट एब्स्ट्रैक्शन, एंड दिस इज प्रीटी बैड, राइट? So what's the solution? Again, the solution is to use the proper functions at the proper abstraction level, or in this case those are the getter methods. So now this is correctly computing the distance and also returning the distance. Okay, moving on. All right, now what we want is we want to create a class which creates circle objects. So for example, आप कोई गेम बना रहे हैं टेम्पल रन टाइप की, और उसमें you have a bunch of coins are represented using circles. So you have to create some mechanism to basically build those circle objects. And to do that is to write a new class. और class आप circle की कैसे लिखते हैं? Again, class circle. This is the constructor function. In it, उसके अंदर self, then xy, basically x जो है और y, that's going to be the center coordinates of the center of the circle, जहाँ भी circle lie करेगा. And then radius is going to be the radius of the circle. So इन तीन चीज़ों से आपका एक circle define हो जाता है, and you can create many circles as you want, anywhere you want, with any given radius. So it's going to be self.x and self.y and then self.radius. So ये तीन चीज़ें आपकी जा रही हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो we have a slight problem. Actually, it's not a slight problem, it's a pretty big problem, because here it's violating abstraction again. Why? Because अभी हमने थोड़ी देर पहले point class बनाई थी, और that point class was already available to us, और उसके availability के बावजूद हमने यहाँ पे अलग से x और y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रखे जो कि पॉइंट क्लास के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए था? पॉइंट ऑब्जेक्ट यूज करना इंस्टेड ऑफ डूइंग इंडिविजुअल एक्स एंड वाई. सो हियर इट्स वायलेटिंग दिस एब्स्ट्रैक्शन. व्हाट यू शुड डू इज you should use objects to build other objects in this case. So अब आप देखेंगे, this is the modified version of the class, the constructor. यहाँ पे the पहला self को छोड़ के अगला parameter is the center and the radius, and then here अगर आप और से देखें
So this center is an object, it's no longer an individual integer value. And this object is actually the point, or the point type. अब हमने इस सर्कल को क्रिएट करना है, तो what we do is, first of all, we need to define the center point, p1 equals to point, and then we pass that as a parameter in the circle, as the first parameter, or दूसरा parameter is going to be the integer, right? So we can create a circle like this. So here, to summarize, we are creating objects using other objects, and this is how you should build your complex objects using smaller, less complex ones. So यहाँ पे आप देख रहे हैं line number 7 में, we are creating an object which is automatically going to call the constructor, और constructor में जो पहला parameter है that is going to be c1, और जो दूसरा parameter है that is going to be the center, which is going to be p1, जो point हमने यहाँ पे define किया. So this center circle is going to have a center of 0, the origin. Alright, so you try this. You need to add code here such that कि अगर center में point type के अलावा कोई और number दे देते हैं, कोई और object देते हैं, या radius में कोई और object देते हैं, तो it's going to give an error, a value error. You need to do that. So for example, quick example, अगर आप लें circle, आप बनाएं यहाँ पे c1 equals to circle, और यहाँ पे आप सेंटर की बजाय पॉइंट ऑब्जेक्ट देने की बजाय आप करते हैं 4, which is integer, which is obviously wrong, और रेडियस में आप इंटीजर देने की बजाय आप कहते हैं स्ट्रिंग, my radius. अब ऑब्वियसली अगर आप ये चीज़ें देंगे तो क्योंकि दिस इज जस्ट एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, उसने यहाँ पे डेटा तो स्टोर कर देगा, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा. तो यू हैव टू राइट कोड विच प्रिवेंट्स दैट एंड जस्ट रेजेस एन एरर अगर यहाँ पे इस टाइप की नहीं है वैल्यूज आपकी. So think about it, do this, and pause the video, and we'll come back in 3, 2, 1. All right. So the solution is pretty simple. So यहाँ पे you have your init. Let me just quickly move that to the new line. And this is essentially your class circle. All right, now what we need to do is we simply need to put instructions. So if we need to first see कि हमारा जो center है वो point type है कि नहीं, तो point type या point class का object है कि नहीं, तो उसके लिए हमें एक function use करना पड़ता है, which is called is instance. So for example, if not is instance center point, then raise value error, center must be point type. राइट, ये जो इस इंस्टेंस फंक्शन है ये करता क्या है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 3 विच इज एन इंटीजर, b इक्वल्स टू लेट्स से ali विच इज अ स्ट्रिंग ऑफ कोर्स. सो अगर आप इंस्टेंस चेक करें इज इंस्टेंस a int, it says true because a is an instance of integer. अगर आप करें a int string, it says false. b is instance b string, क्या b string instance है कि नहीं? That's true because b is an instance of string. So एक ऑब्जेक्ट अगर किसी क्लास का इंस्टेंस है तो this is instance function is going to return true. अब since अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं करता इसका मतलब है कि सेंटर इज नॉट द object of point, which means कि then you have to raise a value error and then you have to get out of this function because that is incorrect again. So अब आप देखेंगे radius जो है that is a type of integer or not. So उसके लिए it's the same procedure. If not is instance radius and int,
then you raise a value error that radius must be int type, right? Point type या point object, कोई भी आप उसमें कुछ भी कह लें. So again, you can run it and then you can create a center circle equals to circle. यहाँ पे आप इसमें integer दे दें 3 और integer दूसरा दे दें, let's say string दे देते हैं Ali, which is obviously wrong. So it's going to say that is inst. Oh, the spellings were wrong. Okay, fine. Let's rerun this. So अब देख रहे हैं कि the class point is not defined. Let's quickly create the class point here. Class point, and then pass. Actually a def underscore init underscore self xy. Self.x equals to x and self.y equals to y. Okay, ये हमने एक point class बना ली. Fine, now we should be good to go. Alright, we create a circle. अब देख रहे हैं कि हमने center में 3 पास की है. अब 3 जो है वो center में check करेगा. 3 is an integer. It's not an instance of point, so it is going to give this value error कि center has to be a point object. And that's what exactly it does. और अगर आपने इसको fix कर भी लेते हैं, for example यहाँ पे point object भेजते हैं by creating a point object, so this is an expression which will resolve into a single value point, और 1,2 के ऊपर आप रखवा दो, और जो दूसरा radius है वो string दे रहे हैं, तो it says radius must be int type, has to be an integer, and you do that also, fix this, and then you get the circle C1. So C1 dot radius, that's 4. C1 dot point, that's it should be center. That's an object point. और अगर आप इसका x coordinate check करना चाह रहे हैं और y coordinate check करना चाह रहे हैं, you can do that like so. That's pretty simple. Okay. Can you add more methods to the circle class? And the answer is yes. So for example, अगर हमने देखना है कि कोई point circle के अंदर है कि नहीं, ये function हम थोड़ा सा पहले देख चुके हैं. तो the way you do it is you first calculate the distance between the point and the current self center. अगर that distance is less than the radius of the circle, it means it is inside. So this code actually does that. और हमने ये भी देखा था actually abstraction वाले lecture में कि अगर आप इस डिस्टेंस को स्किप करके डायरेक्टली वो अंदर वाली चीज एक्सेस करते हैं तो यू ब्रेक वाइल एब्स्ट्रैक्शन, एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट डू. जो मेथड्स होते हैं क्लास के, सिंस उसका पहला पैरामीटर सेल्फ होता है, तो वो जो मेथड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल इस सर्कल टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम करेंगे, और पॉइंट टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कल के मेथड्स काम नहीं करेंगे. दैट्स आल्सो यू शुड नो. सो यू ट्राई दिस. ये जो मेथड्स हैं लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर 9 में, ये दो मेथड्स बेसिकली चेक करें कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर है कि नहीं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं. आई वांट यू गाइस टू पॉज द वीडियो हियर, थिंक अबाउट इट, और ये बताएं कि ये दोनों मेथड्स इक्वल हैं कि नहीं, एग्जैक्टली इक्वल हैं कि नहीं, एंड देन so you can analyze, you can work it out on Thony or maybe on Python tutor. So pause the video and let's come back in 3, 2, 1. All right, so you check this out yourself. I'm not going to tell you the solution for this in this case. Now let's talk about another thing. Basically, let's write our rational class जो कि हमने abstraction और encapsulation वाले lectures में देखी थी, but now using the class syntax. How do we do that? So सबसे पहले rational object बनाने के लिए you need two things, numerator, denominator, and that's what you put in the constructor, right? So when you create a rational class, R1 equals to
Let me just quickly paste here. So if you print, it's going to create first rational, second rational का numerator, which is 3. First rational का numerator is 3, second rational का numerator is 1. All right. Okay, now what we want to do, you want to add another bunch of functionality which we have already seen how to do in the abstraction video. So I'll just quickly go through it. अगर आपने for example इसको print करना है, print self, and then you put print self.numerator, and then this slash, and then dot self dot denominator, yeah, den in this case, right? And then we can simply, instead of doing this, we can do r1 dot print. इसके अंदर again you can see कि इसके parameter में कुछ नहीं जा रहा because r1 is automatically passed here as self, and then self is going to be r1. So जो भी numerator denominator होगा वो r1 से आएगा. You run this code and that's exactly what you see, 3/4. Fine. How do we add two rational numbers? So उसके लिए basically I'll just write one और दूसरा फिर आप खुद करेंगे. Def multiply self यानी current object and the other object. So how do we multiply these two objects? Basically इन दोनों के लिए पहले हमें इनके numerators को multiply करना है, फिर दोनों के denominators को multiply करना है, and then we return the new rational type object. And the way we do it is, so top equals to self dot numerator multiplied by other dot numerator. So basically what you do here is you visualize the parameters, the self as one box and the other as another box. So आप इन दोनों boxes में से numerator को उठाएंगे, multiply करेंगे, top में रख देंगे, फिर इन दोनों boxes में से जो denominator हैं उनको उठाएंगे, multiply करेंगे और bottom में रख देंगे नीचे. Equals to so that's going to be the same. And then what you do is you create a new rational number and then you return that rational number with top as a numerator and bottom as a denominator, right? अगर आप यहाँ पे इसको multiply करें, for example, so that's what you get. So R3 equals to R1 dot mul R2 and R3 dot print. And when we run this code, you'll see कि जब इनको multiply हमने किया, R1 is 3/4, R2 is 1/4, so the answer is 3/16, which is correct. It may not be simplified for now, but हमने देखा था कि simplified करने के लिए भी you just put GCD here in the init, and then it's going to simplify. So इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो rational numbers को multiply कर रहे हैं and then we returning the result back. So यहाँ पे हम add function भी method भी लिख सकते हैं. So you can pause the video, you can try to write this yourself. Def add self हमेशा is going to be the first parameter always, and then other, which is an object. Basically this is a rational object. अभी इन दोनों को add कैसे करेंगे? Write the code here and pause the video and I'll come back in 3, 2, 1. So this is how you write. First you calculate the top, then you calculate the bottom by multiplying. The top is cross multiplying, as you know, and then the bottom is just multiplying the denominators, and then you create a new rational number with the top and bottom, and then you return that. So essentially अब हो क्या रहा है यहाँ पे, if you do R4 equals to R3 dot add R2 and then R4 dot print, then it's going to give you the addition of that. Again, it's not simplified, but you can write code to simplify it. Okay, so here's again what I want you guys to try. So this is basically you try slide. What you want to do is let me quickly copy in
paste the statement here. Okay, so this is a utry slide. You need to write two methods, जो कि एक तो है get inverse. Basically अगर आपके पास एक number है 1/2, इसका inverse क्या होगा? इसका inverse जो है that's going to be 1 divided by 1/2. What you need to do is you need to compute this, you need to return a float value, so that's 2. और invert क्या करता है? You just swap the values of a and a numerator and denominator. So 1/2 का जो inversion है that's going to be 2 or 1, right? So for example आप कहेंगे कि 4/5 को अगर हम get inverse इसका करें तो 1 divided by 4/5, that's the you get 1.25, and then अगर इसको invert करें 5/4, that's also 1.25, same thing. लेकिन the way we are returning is not the same. एक केस में we are returning a float representation, दूसरे केस में we are returning a proper rational object, that's not float. So यहाँ पे अब यूजर्स में देखें तो जब इन्वर्ट करेंगे तो that's going to give you a float value, and जब आप उसको इन्वर्ट करेंगे and you print it out, then that's going to give you a rational value. So try this out and pause the video and let me come back in 3, 2, 1. So इसका solution मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद try करेंगे. And let's try a few more things. Let's go back to our rational object here. Okay, now imagine that we do the following. So you have a rational object R1, and then you have a rational object R2, and then what we have here is, what if we print R1? That's the question. Okay, so इसको मैं delete करता हूँ. Let's run this so that it initializes our global frame. Let's try to print R1. आपके ख्याल में क्या होगा? Just pause the video and think about कि यहाँ पे जब जैसे enter दबाएंगे तो आंसर क्या आएगा. So जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो आंसर आएगा एक अजीबोगरीब किस्म की एक चीज, मेन रैशनल ऑब्जेक्ट एट ब्ला ब्ला. एटलीस्ट इसको ये पता है कि दिस इज रैशनल ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज रैशनल एट ब्ला ब्ला ब्ला. सो बेसिकली प्रिंट को नहीं पता कि उसने रैशनल नंबर को प्रिंट कैसे करना है, क्योंकि उसको उसकी इंटरनल्स का नहीं पता. सो दैट्स एन इशू. अगर हमने इसको खाली प्रिंट करना है तो व्हाट वी कैन डू इज we can fix this, and the way we fix this is something called, by using something called Dunder, DUNDER methods. So Dunder methods क्या चीज़ हैं? They are very special methods which you can use, and they are also automatically called whenever you use some special syntax. So Dunder methods होते क्या हैं actually? Let me show you a picture. So यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि actually before I show you a figure, let me show you something really cool and interesting. Let me clean this up. Okay, so watch this. If we do A equals to 3 and B equals to 4, and when you do A plus B, what do you get? The addition of 3 and 4, right? आपको पता है कि this integer A is an integer object, B is also an integer object, meaning that this object has attributes and behaviors that you can invoke using the dot syntax. Okay, fine.
So जब आप यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं तो यू यूज दिस प्लस सिंटैक्स, और इंटरनली पाइथन क्या करता है, ये तो आपने लिखा है ना, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो वैसे ही दिस प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय अ कॉल एक्सप्रेशन. कौन सी कॉल एक्सप्रेशन? इट्स गोइंग टू बी a dot underscore add underscore b. So again this underscores से जो भी मेथड शुरू होता है एंड होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्पेशल फंक्शन, एंड you can basically, this is called automatically when you use the plus sign here. So this gives you the same thing here. So similarly आपके पास जो string अगर आपने दो let's mul actually multiply. So जब आपने a और b को multiply करना है तो mul function method is called and you get the result 12. Let's say अगर आपके पास c equals to a and d equals to b है, and then you want to add two strings, तो अब क्या होगा, c dot underscore add, because what you can do is you can use the plus operator, right? तो जब plus operator use करेंगे, this is internally converted into call expression before executing, और आपकी जो internal call expression बन जाएगी, it's going to look like c dot underscore add underscore d. Press enter, you get exactly the same thing. Can you multiply c and d? And remember, c and d are strings. We cannot. Now what's happening here? So c multiply by d भी करें आप, तो you cannot do that. Why? What's happening here? ये क्यों नहीं चला? And the reason is, my friends, कि integer के केस में underscore mul was in the public interface, meaning कि everybody could access. लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में उन्होंने मल को पब्लिक इंटरफेस से निकाल दिया, ओनली सिर्फ ऐड पब्लिक इंटरफेस में. सो दैट्स व्हाई यू कुड एक्सेस ऐड फॉर स्ट्रिंग्स बट नॉट मल फॉर स्ट्रिंग्स. सो दैट्स द पावर ऑफ एनकैप्सुलेशन. Okay, going back to our thing here. So now we are ready to see this picture. यहाँ पे हर ऑपरेटर के अगेंस्ट यू हैव अ स्पेशल फंक्शन. सो प्लस के अगेंस्ट यू हैव दिस एड अंडरस्कोर, ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट दिस अंडरस्कोर, दिस इज डबल अंडरस्कोर बिगिनिंग, डबल अंडरस्कोर एंड. माइनस के केस में इट्स सब एंड स्टार, मल्टीप्लिकेशन में इट्स मल एंड सो ऑन. और बेसिकली हर ऑपरेटर के अगेंस्ट में जो भी आप बाइनरी ऑपरेटर आप यूज करते हैं उसके अगेंस्ट देयर इज अ फंक्शन दैट यू कैन basically you can write yourself, and that function will be called automatically for your object whenever you use that operator on your object. Okay, तो जब भी हमें अगर कोई चीज भूल जाए कि let's say less than के साथ equivalent कौन सा function method था which we need to write this underscore lt, we can just look this up in this this table. Okay, so now back to our question here. When we run this code and when we try to print the value of r1, it gives us a pretty weird answer. When we try to convert r1 to a string, it gives us exactly the same answer, which is very weird. अब उसको नहीं पता कि उसने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह प्रिंट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट हैपेंस है, जब भी आप कुछ चीज प्रिंट करते हैं तो इंटरनली पाइथन क्या करता है, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और फिर वो प्रिंट करता है. दैट्स व्हाट इट डज. सो कीप दैट इन माइंड. तो यहाँ पे भी उसने जब आपने प्रिंट किया तो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और क्योंकि उसको पता नहीं कि स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना, तो उसने सिर्फ ऑब्जेक्ट के टाइप और ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है जहाँ पे वो है वो उठा के स्ट्रिंग फॉर्म में आपको वापस कर दिया. एंड दैट वाज व्हाट इट प्रिंट्स, राइट? Now what you can do is you can overwrite this something called underscore str method. So def underscore str underscore self. जब आप ये करेंगे तो this special method has to return a string. So this is going to be
and x comma y. Actually x divided by, it should be numerator divided by denominator, right? Or we could simply either yeah, I mean, we could do pretty much a lot of things here. We can convert it into a string in many ways we like. So अब हुआ क्या, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे हमारा अपना रैशनल ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर आप स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन कॉल str, अब होता क्या है कि str इस ऑब्जेक्ट की क्लास में जाके देखेगा विच इज रैशनल, कि क्या अंडरस्कोर str डिफाइंड है कि नहीं. अगर है तो वो उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा यूजिंग दिस r1 ऑब्जेक्ट एज सेल्फ, and then whatever that function returns is going to be the output of str. Okay, so again str, let's try. अब इस दफा उसने ये क्यों प्रिंट किया, because now str is going to search underscore str in r1's class which is rational, और उसको मिल गया फंक्शन. अगर नहीं मिलेगा तो वो वही अजीबोगरीब किस्म की स्ट्रिंग प्रिंट करेगा जो कि भी हम देख रहे थे. अब क्योंकि उसको फंक्शन मिल गया, उसने स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, एंड दैट्स व्हाट यू सी. अगर हम इसको प्रिंट करें, प्रिंट r1, तो इट गिव्स यू द करेक्ट स्ट्रिंग आउटपुट जो कि हमने रखा हुआ. और नाउ व्हाट वी कैन आल्सो डू विद द सेकंड ऑब्जेक्ट r2, and that is 1/4, right? So that's how you can override these methods. This is called a Dunder method. अब क्या हम और चीजें भी कर सकते हैं इसमें से? So एक दो चीजें अगर आप और देखें, अगर हम इसमें करें print, so not actually print, what's the type of r1? That's main rational class, right? That's a pretty weird output. अगर हम print करें actually rational class को ही, तो this is what we get, right? Class main rational object, and this is what it's saying, that it's a type of main rational class. So far what we have here is we have this simple rational class जिसके अंदर हमने str override किया, which is going to automatically convert this into a string form. So when we run this, you'll see r1 and r2 are printed as expected, but r3 को जब हम print करेंगे, print r3, या इसको string में convert करने की कोशिश करेंगे, तो that's going to show us 5/1. So 5/1 is just 5. You know, it's correct, sure, but it looks a little bit weird. So now what we do is, now it's your exercise here. You are going to modify the underscore string. So basically, you are going to modify the underscore string so that अगर कोई नंबर जिसका डिनोमिनेटर में 1 हो, it's just prints 1. So for example, यहाँ पे the rational is 3/1. When you print b, it just prints 3. It ignores the 1. 1 की print करने की जरूरत नहीं है, right? तो यहाँ पे भी it should print 5, not 5/1. So pause this video, modify the string function, and then we come back in 3, 2, 1. Yeah. Okay, so what's the solution? Solution is pretty simple. That if self dot denominator equals to 1, so you simply return a string that is
self dot न्यूमिनेटर, आपने सिर्फ न्यूमिनेटर को रिटर्न करना है. अदरवाइज अगर वो 1 नहीं है तो फिर then you can return that entire fraction in a string form. So now when you run this, आप देख रहे हैं कि now it basically correctly prints 3 instead of 3 by 1, right? But still we cannot add numbers here. So for example, if we want to add or multiply, for example, a and b, we still get an error. और अगेन हमने देखा था कि जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो पाइथन tries to convert this into internally into that call expression. So call expression जो है अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें कौन सी वो इन्वोक करेगा, तो that is star, we have underscore mul. So this is the method which it's going to look into your code and try to find it. अगर वो उसको मिलता है तो then it's going to run that. Otherwise it's going to give you an error like this. So for example, अगर आपने multiplication operator को implement करना है तो then you have to do mul underscore. That's a special function, method. You cannot change it, but no matter what the method is, first parameter has to be self and then other. So pause the video and implement this and we'll come back in 3, 2, 1. Okay, now I'm going to add actually both mul and add methods like this. Implementation you have already seen. So basically now this is going to enable us to multiply and add things together. So for example, a plus b, that's going to show us basically यहाँ पे आप रैशनल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो क्योंकि पाइथन को पता नहीं है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट इज गोइंग टू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जब हम कन्वर्ट करेंगे वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस थिंग हियर, दिस मेथड जो कि इसको प्रॉपर्ली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और देन इज गोइंग टू रिटर्न दिस. अब क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, दिस कॉल एक्सप्रेशन इट विल बी रिजॉल्व इनटू अ सिंगल वैल्यू विच इज गोइंग टू बी द रैशनल ऑब्जेक्ट, विच जिसका मतलब है कि वी कैन चेन इट लाइक दिस, यू नो, उसमें काफी सारी लंबी चेन हम बना सकते हैं. सो एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, and that's what you get. A pretty weird thing, but that's what it is. So to summarize, इस सेशन में हमने देखा कि आपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं, और हमने देखा कि अगर आपने ऑपरेटर्स यूज करने हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फिर आप यू कैन ओवरराइड these Dunder methods and then you can use those operators in your program. So these Dunder methods, which are special functions, special methods that begin and end with underscores, so they are called automatically. Or by the way, अभी मैंने एक लफ्ज़ बोला है, we are overriding these Dunder methods. So override करने का क्या मतलब? Override का मतलब है कि you provide an alternate functionality using the same function name and the same parameters. So that's what override means. So we have overridden mul, we have overridden add, we have overridden string, और these things are automatically called. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी उनको explicitly call नहीं कर रहे. So for example, a star b, again string में convert करें for example इसको, that's 3/4. लेकिन अगर हम इसको explicitly call like करना भी चाहें underscore mul को तो आप कर सकते हैं, और this acts like a normal method for an object. So for example, अगर आपने यहाँ पे इसको call करना है, instead of doing a star b, what you do is you do a dot underscore mul underscore b, right? That's what it is. और जो पहला पैरामीटर self वो हो जाएगा आपका a. So that gives you the same thing. इसको तीसरे तरीके से भी इन्वोक कर सकते हैं, that is क्लास का नाम which is rational dot
अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सो किसी भी मेथड को आप इस तरह इन्वोक कर सकते हैं क्लास के भी, चाहे वो अंडरस्कोर से शुरू होता हो, चाहे वो आप इनिट को भी कर सकते हैं इस तरह से इन्वोक, और चाहे वो सिन होता हो अंडरस्कोर से ना भी शुरू होता, डजंट मैटर, एनी मेथड यू कैन इन्वोक इट लाइक दिस। सो यहाँ पे पहला पैरामीटर जब क्लास का नाम डाल के करेंगे इन्वोक, तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी सेल्फ, फिर यू हैव टू गिव ए एंड बी एक्सप्लिसिटली, वो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पास नहीं करेगा, एंड दैट गिव्स यू द सेम थिंग हियर। सो दैट्स द different ways that you can call the same effect, different ways to call the same function to get the same effect. And what's the best and most abstract way to do it? Obviously this one. So ये आप कब override करेंगे? This is called operator overloading. So yeah, so this is called operator overloading in other languages. Basically यहाँ पे भी we are overloading operators. Vectors class अगर आप बनाते हैं उसके लिए we can do this. Complex class के लिए we can do this. Rationals के लिए sure. Python strings के लिए बना के दी हुई है. You can do it with any other thing which it is natural to add or multiply things or divide things, and so there are a lot of possibilities to think about. So that was it for today, and see you guys next time with other topics.